Hi, Saima. How are you? You've unmuted yourself. Hanji, ab bole. How are you? You've muted yourself. Why did she mute herself? Yeah, can you hear me now? Yeah, you'd muted yourself. How are you? Boutique, how are you? Good. Thank you for reaching out. No, this is like such an important topic. I Every mother is suffering. Yeah, of course, including myself. My own daughter gave IB this year, Oh, so we've gone through a very stressful 1 month, over 1 month as well. yeah. So I can Okay. totally relate. And your full name is Saima Asghar. Asghar Riaz, yeah. You can just say Saima Asghar is enough as well. And you're an educationist and you work with the British Council. No, I don't work. No, I have a company that works with education admissions for UK universities. I'm the representative for Warwick University, Okay. and I'm a trainer and a teacher trainer and a guidance counselor. So I do some work with the British Council as well, but that's on IELTS, so that's not relevant to this topic. results. ठीक है, we should be live in a minute. Yeah. And we are live. Assalamu alaikum, everybody. This is the original Scaryammi, and I'm here with Saima Asghar Riaz, who is an educationist. She's also helped students get into universities that they're interested in. And she is, like most of you, a stressed mom, a stressed ammi because of her own daughter just gave the IB. So I wanted to call upon Saima and have her come and talk to you because a lot of the mothers have mentioned that they're super stressed because their children have not received the grades that they were expecting. You know, 3 saal ki mehnat zaya ho gayi hai, 2 saal ki mehnat, etc. Very stressed. So since Saima works with admissions, I wanted to get her perspective on how bleak is the scenario for our students. So Assalamu alaikum, Saima, and welcome to Scary Ammi. So let's start with how bad is it? Look, 2020 is bad. Let's just start with that. So I think in the whole perspective of 2020, it's not bad, and that's what I'm telling all the parents I'm meeting. And if you think at what a shocker 2020 has been so far and how terrible it's been so far, yes, I know it's bad, I know it's been very stressful for the kids, but it's not the end of the world. These grades are only as good as a university admission, and that is it. These students will never ever need these grades again for the rest of their lives. So we have to put things in perspective. This is not a measure of how good the students are, and because everybody knows that these students were not assessed. So yes, in other years, we could say that Cambridge results, IB results are a reflection of the student's academic performance to a large extent, but not completely, even then. But in this year, everybody with the slightest of intelligence knows that these results are not meant to measure the students' intelligence or their academic performance. They are only as good as how the school felt they were, they had performed, and how their other peers have performed, because these grades have been comparative, and everybody knows that. And for the rest of their life, everybody will know that exams taken in 2020 were not reflective of your performance. So that's what I've been telling my own daughter. That's what I'm telling everybody else. Once you've got your university admissions, forget about these results. Nobody will bother. Okay? कोई बात भी नहीं पूछता. जब आप एक बार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर जाते हैं, कोई ये नहीं पूछता कि आपके ए लेवल में क्या मार्क्स आए थे जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं या आप मास्टर्स की डिग्री के लिए जाते हैं. कोई नहीं पूछता कि ओ लेवल में क्या आया था, ए लेवल में क्या आया था. सब अंडर ग्रेजुएट डिग्री देखते हैं और आगे चलते हैं. So that's my perspective. What is really confusing parents and even confusing me is if these results were made on the basis of the mock exams,
तो फिर अगर मॉक एग्जाम में एक बच्चे के ए स्टार्स हैं, तो इसमें सी ई ये मतलब ये क्या हो रहा है? देखिए आयशा, एक ओके, देयर्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। एक तो ये है कि हर दिस these grades were not given only on the basis of mock exams, ठीक है? So that's a huge myth. कैम्ब्रिज ने स्कूल्स को ये कहा था, आई थिंक मैंने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने इस स्केरियमी में शायद टॉक की थी, परहैप्स मुझे याद नहीं, बट कैम्ब्रिज ने ये कहा था स्कूल्स को कि आपने असेस करना है स्टूडेंट्स को, और उनने एक लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया दिया था कि आपने इन क्राइटेरिया पे असेस करना है स्टूडेंट्स को। इनमें से कोई भी क्राइटेरिया आप चूज कर सकते हैं, आप हमें बता दें इसमें से आप कौन सा क्राइटेरिया चूज करेंगे। सो द स्कूल्स चोज व्हाट क्राइटेरिया दे वर यूजिंग। बहुत से स्कूल्स ने मॉक रिजल्ट्स देखे, बहुत से स्कूल्स ने जिनके भी मॉक एग्जाम्स होने थे उनने कोई और पिछली परफॉर्मेंस देखी। आइदर वे स्कूल्स ने एक जो भी इंटरनली डिसाइड किया उनने वो रिजल्ट्स भेजे, और उसकी बेसिस, लेकिन उसके अंदर भी द स्कूल्स हैव टू रैंक स्टूडेंट्स विद, सो अगर स्कूल ने 20 स्टूडेंट्स को ए कहा कि हम फोरकास्ट करते हैं कि 20 स्टूडेंट्स विल गेट एन ए, तो उसमें भी उन्हें बताना था कि ए 20 ए के अंदर भी कैटेगरीज थी कि स्ट्रॉन्ग ए किसका है, वीक ए किसका है। So they had to rank those students against each other, जो नॉर्मल सालों में नहीं होता। नॉर्मल सालों में स्टूडेंट्स आर नॉट कंपेयर्ड टू ईच अदर। सो एक तो वो था, और फिर कैम्ब्रिज ने वो डेटा अपने स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग में डाला, एंड देन दे सॉ कि अगर बहुत ज्यादा एज आ रहे थे किसी एक स्कूल से, तो उनने वो एज कम कर दिए। अगर बहुत ज्यादा डीज आ रहे थे तो उनने वो डीज कम करके उनको सीज बना दिया। ऐसा नहीं है कि सब स्टूडेंट्स के बुरे आए। आई हैव बीन ओवर दिस होल वीकेंड, मैं थर्सडे से लेकर सैटरडे तक मैं कमरे में बंद स्टूडेंट्स के एडमिशंस करा रही थी यूके यूनिवर्सिटीज में। I have been approached by quite a few students जिनके surprisingly अच्छे grades आए। They can't believe it, they're jumping with joy. वो कहते हैं जी हमने तो जिन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था वो तो 3 Bs मांग रहे थे, हमारे तो A स्टार और 2 As आ गए। अब हम क्या करें, हमने अब उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, हमने किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में जाना है। सो ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन वो अभी आएंगे नहीं सामने, बिकॉज दे स्ट्रक लकी। और ऐसे भी हैं who have been disadvantaged, who have been unlucky. So we have to again see things in perspective. It has been terrible, it has been a fiasco, but what we need to do is, and I hope that Cambridge will, I know the government is working on it, I hope that Cambridge will you know start an individual appeal process. अभी तक उन्होंने अलाउ नहीं किया था, उन्होंने कहा था इस साल लोग बच्चे खुद अपील नहीं कर सकेंगे और सिर्फ स्कूल्स अपील करेंगे। ना स्कूल्स की अपील करने का मतलब ये है कि स्कूल कहेगा कि हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट गलत आया है, आपने हमारा क्राइटेरिया ठीक से नहीं देखा, आप हमारे दोबारा हमारा रिजल्ट देखें। उसमें खदशा ये है कि जिनके अच्छे आए थे उनके बुरे हो जाएंगे, और जिनके बुरे आए थे शायद उनके बेहतर हो जाएंगे। सो स्कूल्स आर नॉट विलिंग टू डू दैट जनरली बिकॉज दे डोंट वांट टू रिस्क इट। इसलिए कैम्ब्रिज से आई थिंक द गवर्नमेंट इज आल्सो अपीलिंग, इफ आई एम करेक्ट, कि इंडिविजुअल अपील्स अलाउ करें, ताकि एक बच्चा, अगर मेरी बच्ची का बुरा आया है तो व्हाई डज एवरीबडी एल्स हैव टू गेट देयर ग्रेड्स रीमार्क्ड? मुझे बताएं कि इसका मतलब है कि कैम्ब्रिज ने बस रैंडमली किया कि अच्छा दिस बच्चा, नहीं, रैंडमली नहीं किया। कैम्ब्रिज ने हिस्टोरिकल डेटा देखा स्कूल्स का, उन्होंने ये कहा था कि हम पिछले 3 साल का डेटा देखेंगे स्कूल्स के। देखें, एक बड़ी साइकोलॉजिकल सी बात है, अगर आप टीचर्स को कहेंगे कि जी आपने अब अपने बच्चों को ग्रेड करना है, आपने बताना है क्या मार्क मिलेगा और हम एग्जैक्टली वही मार्क बता देंगे, सो उसमें जाहिर है हर टीचर कोशिश करेगी हमारे बच्चे को अच्छा मार्क आए। और तो कैम्ब्रिज को ये खदशा था कि जो टीचर्स हैं या स्कूल्स हैं वो बहुत एलिवेट करके रिजल्ट्स भेजेंगी, ग्रेड्स भेजेंगी। ज्यादातर स्कूल्स, नॉट ऑल, कुछ अच्छे स्कूल है, लेकिन वो देखें दुनिया भर के 135 कंट्रीज के स्कूल्स को तो उनको नहीं पता कि क्या एथिक्स है, क्या क्या वैल्यूज हैं। सो उनने उस चीज को कम करने के लिए, जो मेरी समझ है, आई डोंट वर्क विद कैम्ब्रिज फॉर कैम्ब्रिज, सो आई डोंट नो, बट जो मैंने उनका पढ़ा, जो मैंने रिसर्च की, तो उससे उन्हें कहा कि हम ये भी देखेंगे कि पिछले 3 साल में भी आपके ऐसे ग्रेड्स आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, कि पहले तो आपके बीज और सीज आते थे, अब अचानक आपके सारे ए स्टार्स आ रहे हैं। सो ये भी तो नहीं हो सकता ना। So they said कि हम हिस्टोरिकल डेटा आपका देखेंगे एंड वी विल देन मैप योर ग्रेड्स जो आपने भेजे अगेंस्ट योर हिस्टोरिकल डेटा, एंड वी ट्राई कि आपका जो कर्व है वो उतना ही रहे, जितने आपको हर साल एज आते थे इस साल भी आपके उतने ही एज आए, उससे ज्यादा ना आए। Saima, then that's very unfair, right? फिर अगर एक बच्चे ने इतनी मेहनत की है, वो पक्का ए स्टार स्टूडेंट था, जस्ट बिकॉज उसके स्कूल का डेटा ये है कि उसे इतने एज नहीं मिलते थे स्कूल को, ये स्कूल में किसी का ए स्टार नहीं आया हुआ तो उसका नहीं आएगा, ये हाँ, लेकिन अनफेयर।
So that is why they had said कि schools को chance होगा अपील करने का. So for example कोई school है जिसके अभी सिर्फ 2 साल हुए कैम्ब्रिज वो ऑफर कर रहे हैं, सिर्फ 2 साल से वो A levels ऑफर कर रहे हैं, वो या नए schools हैं. So या उनका historically data अच्छा नहीं था, लेकिन इस साल उन्होंने बड़ी मेहनत की है and they have proof कि उन्होंने मेहनत की है. So schools would be allowed to appeal कि हमारे school के साथ ज्यादती हुई है, आप हमारा grade change करें. This is what Cambridge had set out, और ये Cambridge ने 4 महीने पहले बताया हुआ था. So अब जो कोशिश है जो गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है, यूके गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इंडिविजुअल अपील्स अलाउ करें और अपील के ऊपर जो फी है वो ना देनी पड़े. एंड दैट सीम्स लाइक अ वायबल ऑप्शन. अभी आपको एक खबर दूं कि आज आईबी ने अक्रॉस द वर्ल्ड, आईबी के लिए किसी एक गवर्नमेंट ने नहीं शोर मचाया, किसी एक ने का, बट अक्रॉस द वर्ल्ड क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत अपसेट थे, तो आईबी ने खुद ही अपने रिजल्ट्स जो डिक्लेयर किए थे, 6 जुलाई को शायद डिक्लेयर हुआ था आईबी का रिजल्ट. सो 1.5 month लेटर आईबी ने आज खुद से वॉलंटरली सारे रिजल्ट्स रिवाइज किए और उन्होंने कहा कि कोई रिजल्ट कम नहीं होगा, लेकिन जो रिजल्ट्स हमें लग रहा है कि बेहतर हो सकते हैं वो बेहतर होंगे. और उनने क्या किया, उनने हिस्टोरिकल डेटा जो लेना था स्कूल्स का उनने वो हटा दिया. उनने सिर्फ कहा कि जो प्रिडिक्टेड ग्रेड्स और जो हमें रिटन असाइनमेंट्स के ग्रेड्स आए हैं हम सिर्फ उसकी बेसिस पे देंगे. बट आईबी इज डिफरेंट क्योंकि आईबी की रिटन असाइनमेंट जो होती है वो पहले ही आईबी मॉडरेट करता है, जबकि ए लेवल्स में कोई ऐसा एग्जाम या कोई रिटन असाइनमेंट नहीं होती जो ए लेवल्स वाले मार्क करें, सिर्फ एग्जाम होता है. But सो आपको स्कूल क्या लगता है, as somebody who is so much a part of this entire system, do you think Cambridge University is going to revise their results? देखिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी करे रिवाइज तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ना करे रिवाइज तो आई थिंक एज पेरेंट्स, एज अ कंट्री, वी शुड नॉट होल्ड आवर ब्रेथ कि कोई एक्सटर्नल, पहले ही हमने सब कुछ अपना आउटसोर्स किया हुआ है, हमने अपनी एजुकेशन आउटसोर्स कर दी है कैम्ब्रिज को. हाय बेटा, वी शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि कैम्ब्रिज हमारे लिए कुछ करेगा. आई नो देयर इज टॉक कि जी हम सब वी आर द बिगेस्ट मार्केट फॉर कैम्ब्रिज, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. वी शुड नॉट बी द बिगेस्ट मार्केट ऑफ कैम्ब्रिज, वी शुड आइडियली बी द स्मॉलेस्ट मार्केट फॉर कैम्ब्रिज. सो यू नो, सो बट वो है देर की बात की बातें हैं, वो 20 साल का जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक दिन में तो नहीं सॉल्व होंगी. लेकिन द पॉइंट इज व्हाट कैन वी डू नाउ. देखिए हमारे कितने बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जो कैम्ब्रिज देख, मतलब अगर 2 लाख बच्चों ने कैम्ब्रिज का एग्जाम दिया है, ए लेवल्स दिया इस साल, उसमें से कितने हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं. फॉरेन यूनिवर्सिटीज में 500 जा रहे होंगे, 600 जा रहे होंगे, दैट्स इट अक्रॉस पाकिस्तान. फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर बीइंग वेरी फ्लेक्सिबल, एज फ्लेक्सिबल एज दे कैन बी. हाँ, लोकल यूनिवर्सिटीज अलबत्ता, आई वुड बी मोर कंसर्न अबाउट लोकल यूनिवर्सिटीज. अब लोकल यूनिवर्सिटीज के लिए तो हमें कैम्ब्रिज के इंतजार करने की जरूरत नहीं है ना. कैम्ब्रिज क्या करता है, लोकल यूनिवर्सिटीज तो हमारे काबू में, हम उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. और हम और वो कह रहे हैं, आज मैंने मुराद रॉस के बात सुनी, आई वाज ऑन अ sort of live show with him, he was on the panel and he said कि हम कल की कैम्ब्रिज के अनाउंसमेंट के बाद हम लोकल यूनिवर्सिटीज को कहेंगे कि आप जो हैं आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं. सो द सिंपलेस्ट थिंग इज, आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो सब अपना एंट्री टेस्ट लेती हैं, लम्स हो गया, बहुत सी. सो But यू नो, आप तो क्या करेंगे, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही आयशा, यू आर ऑन म्यूट. can you hear me? नाउ आई कैन हियर यू. या What I'm saying is कि आप अगर एंट्री टेस्ट की बात करती हैं, right? So उधर भी there is a huge मतलब hubris. Like HSN has been trying to take their entry test since March, I think, because my boys are in HSN, तो HSN का मुझे थोड़ा ज़्यादा पता है. So literally, I think HSN का entrance test होना था मार्च में, मार्च, अब वो अप्रैल, हो रहा है. जून, जुलाई, अगस्त. देयर इज अ डिफरेंस आयशा. एचएसएम के बच्चे 6 साल के हैं, जिन बच्चों ने यूनिवर्सिटी में जाना है. कैसे लेंगे? Will they, मतलब can we allow thousands of children to come together? देखें, एसएटी ले लें, अपना कोई स्टैंडर्डाइज एंट्री टेस्ट ले लें. पाकिस्तान हैज अ नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो गैट कराता है, ग्रेजुएट एंट्री टेस्ट कराता है, एडमिशंस टेस्ट कराता है. हम कोई भी एक टेस्ट हम ले सकते हैं, दैट कैन बी अ स्टैंडर्डाइज्ड एंट्री टेस्ट, दैट कैन बी डन ऑनलाइन. हमारे मेडिकल स्कूल के टेस्ट होते हैं. आपकी आवाज फिर आप म्यूट पे हो आयशा. आई कांट, आर यू टॉकिंग टू मी? No, I was just listening. Sorry. So you see, I think what universities need to be doing now is to be more proactive instead of reactive. They have to stop waiting कि Cambridge क्या करेगा. Parents need to be pressurizing
on talking to universities कि हमारे बच्चों ने जो लोकल यूनिवर्सिटीज में जाना ना, लोकल यूनिवर्सिटीज किस तरह रिएक्ट कर रही है. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो एडमिशन टेस्ट लेती हैं, वैसे भी लेती हैं, पहले से लेती हैं, ठीक है, वो अभी भी लेंगी, जिस तरह भी होगा वो लेंगी. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे जा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं, वो यूएचएस का एंट्री टेस्ट लेते हैं. सो व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज कि अभी जो यूनिवर्सिटीज ए लेवल्स भी देखती हैं या इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखती हैं प्लस अपना टेस्ट का रिजल्ट देखती हैं, उसकी वेटेज चेंज करा दें. उनको कहें कि जी अगर अभी आप 50% वेटेज देते थे अपने एंट्री टेस्ट को, 50% वेटेज देते थे ए लेवल्स को, या 60% देते थे, व्हाटएवर, आप अपने एंट्री टेस्ट की वेटेज बढ़ा दें. एक ऑप्शन ये हो सकता है. दूसरा ऑप्शन जो मुझे समझ आती है, जब हमारे बच्चे ए लेवल्स करते हैं और वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो आईबीसीसी से उनको इक्विवेलेंस लेनी पड़ती है कि उनका ए लेवल ग्रेड इज इक्वल टू इंटरमीडिएट ग्रेड. उसके ऊपर काफी बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं ए लेवल के बच्चों के, क्योंकि उनने सिर्फ 3 एग्जाम्स दिए हुए, medical school exams and other such. मेडिकल स्कूल एंड अदर्स एज वेल, क्योंकि उनने सिर्फ 3 एग्जाम्स दिए हुए होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट के बच्चों ने इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज वगैरह भी पढ़ा हुआ होता है. और ये आज आसिया खरम आगा ने मेरी पोस्ट के ऊपर बड़ा डिटेल्ड फीडबैक दिया. इन क्वाइट I had posted a video in quite a few other groups and she very kindly responded and she said कि IBCC ने, और ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, और फिर उनने वो बताया, she said IBCC को उनने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि 15% एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे ए लेवल के स्टूडेंट्स को इस बार. So I think there just needs to be clearer communication and less panic, because Cambridge जो कर रहा है, Cambridge has to respond to the whole world. So you know, yes, we are the biggest market, but at the end of the day, they can't say कि हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए चेंज करेंगे और हम औरों के लिए नहीं चेंज करेंगे, because it is a standardized exam. मैं IELTS एग्जाम के लिए काम करती हूँ दुबई में. So अगर we can't say, I'm just giving you an example, कि अगर IELTS का एग्जाम में पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम हो तो IELTS कैम्ब्रिज ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के लिए हम ये मार्क्स बेहतर कर देते हैं और पूरी दुनिया में जैसे हैं वैसे ही रहें. That's not possible. So they have to change the system for the whole world. And I hope they do, because they have messed up. But how can we solve our problem? So, you know, so I think we have to, because हो सकता है उनकी प्रॉब्लम, वो जो करेंगे अपना डिसीजन चेंज करेंगे, हो सकता है उसमें महीना लग जाए, उस वक्त तक आपके यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस का टाइम निकल जाए. सो यूके यूनिवर्सिटीज में तो एडमिशंस हो गए, दे आर नॉट इवन वेटिंग. उनके 13th को रिजल्ट आना था, उनके बिटवीन 13th एंड 17th उनके सारे एडमिशंस क्लोज हो गए तकरीबन. The universities have not waited. They have said अपील होगी, बेहतर मार्क आ जाएगा, हमें कांटेक्ट कर लेना, हम आपको अकोमोडेट कर सके हम आपको जरूर कर लेंगे, अकोमोडेट नहीं कर सके हम आपको बता देंगे, वरना आपका जहां एडमिशन मिल रहा है आप प्लीज ले लें, बट वी आर नॉट गोइंग टू यू नो मेक, या आप अगले साल के लिए डिफर करा लें. सो वी हैव टू मूव ऑन, यू सी, बिकॉज इट इज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स. हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वही सिचुएशन रहेगी जो पहले थी, पिछले साल थी. Achha, Saima, we have a couple of questions. Samar Kadri is saying that what schools did was that they grouped students. तो उन्होंने एक ग्रुप उनका बनाया जिनके अच्छे ग्रेड्स थे और एक ग्रुप उनका बनाया जिनके अच्छे ग्रेड्स नहीं थे. जिनके अच्छे ग्रेड्स नहीं थे उनको उन्होंने कहा कि आप अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दें, और ग्रुप 1 बेल कर्व में फिट कर दिया. ए स्टार स्टूडेंट्स बी हो गए, बी ए सी हो गया. Exactly. लेकिन अक्टूबर नवंबर में भी देयर इज नो गारंटी कि एग्जाम्स हो पाएंगे. Given we are in the middle of August and Corona has not gone at all. Exactly. So you see, if you recall, मैंने आपके ग्रुप में मैंने जब ये आई थी अनाउंसमेंट, मैंने अप्रैल मई में मैंने पेरेंट्स को अर्ज किया था कि प्लीज बच्चों को एग्जाम्स देने दें, क्योंकि अगर कुछ बच्चे रुक जाते हैं एग्जाम दे, ये रिजल्ट अपना रिजल्ट ऑप्ट करें कि आप रिजल्ट लें इस समय में, क्योंकि अगर स्कूल जैसे स्कूल्स ने किया है कि उन्होंने चंद बच्चों का भेजा और चंद का नहीं भेजा, उनके स्कूल में अगर हिस्टोरिकली 20% डी ग्रेड्स आते थे, 20% ए ग्रेड्स आते थे और बीच में आते थे बी और सीज. सो कैम्ब्रिज ने अगर वो 20% 40 स्टूडेंट्स पे पहले आते थे, अब वही 20% 20 स्टूडेंट्स पे उन्होंने उसको स्प्लिट कर दिया. सो जिनके स्कूल ने फोरकास्टेड अगर एज सिर्फ एज और बीस भेजे, उनने उनको ए बी सी डी पे स्कैटर कर दिया. सो यू नो, सो जिन लोगों ने जो रुक गए उन्होंने तो अपना साल भी वेस्ट कर लिया, लेकिन जिनका रिजल्ट गया उनके साथ ज्यादती होगी. सो अगर सब दे देते और सब कहते थे हमारा भी रिजल्ट आप दे दें, उनने साल रिपीट करना होता वो फिर भी कर सकते थे.
they still had the option of repeating the year. और कैम्ब्रिज ने, if I'm not mistaken, I may be wrong in this, but I think कैम्ब्रिज ने कहा था कि वो repeat के पैसे नहीं लेंगे if people decide to repeat. I may be wrong on this. So so I think schools की तरफ से भी कुछ schools की तरफ से, not all, कुछ schools की तरफ से भी एक मिस गाइडेंस हुई. फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम हुई थी बिफोर द समर, ट्यूशन माफिया. बहुत से मुझे पेरेंट्स ने कहा कि हमारे स्कूल्स या हमारी टीचर्स कह रही हैं कि आप अभी रिजल्ट मत लें, आप अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दें, हमसे ट्यूशन ले लें. और ये फैसल मुश्ताक ने, जो रूट्स के सीईओ हैं, उनने इसके ऊपर बड़ी अच्छी एक लाइव वीडियो की थी और उनने अपील की थी हाथ जोड़ के बच्चों से कि खुदा के लिए ट्यूशन के चक्कर में मत पड़े, आपको लोग अपनी ट्यूशन बेचने के लिए आपका साल जाया करा रहे हैं, आप रिजल्ट भेजें अपना. So, so a lot of parents got very confused because they did not get the right guidance, because everybody was trying to look after their own interest, including the tuition teachers. So I think वो भी एक वो हुआ. So the schools were trying कि हमारा रिजल्ट अच्छा आए, हमारा रिजल्ट बुरा ना आए. So but generally I think schools were pretty fair in giving the information, at least the good schools. अब देखें कैम्ब्रिज भी पाकिस्तान के तकरीबन, अब पहले एक, जब 10 साल पहले था कि चंद स्कूल कैम्ब्रिज कराते थे. पिछले 10 सालों में, 15 सालों में अनफॉर्चुनेटली हर गली मोहल्ले का स्कूल कैम्ब्रिज का एग्जाम करा रहा है. नाउ वी डोंट नो व्हाट द क्वालिटी ऑफ दोस टीचर्स इज. वी डोंट नो कि वो कितना असेस कर रहे हैं बच्चों को. वो रट्टे लगवाते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, बच्चे ट्यूशन लेते हैं, एग्जाम देते हैं, ग्रेड्स ले लेते हैं. सो सो आपके एचएसएन हो गया, ग्रामर, कराची ग्रामर, लाइसियम, ये कितने स्कूल हैं. आई वर्क विद स्कूल्स, मैं वॉरिक के लिए काउंसलिंग करती हूँ. हैंडफुल ऑफ 20 टॉप स्कूल्स इन द कंट्री, नॉट मोर देन दैट. आपकी बीकन हाउस या सिटी स्कूल की भी हर ब्रांच का एक क्वालिटी नहीं है स्टूडेंट, बिकॉज वो हर मोहल्ले में, हर एरिया में खुले हुए हैं. सो और टीचर्स की भी वो क्वालिटी नहीं. जो बीकन हाउस डिफेंस कैंपस की क्वालिटी शायद होगी. बीकन हाउस की टीचर्स अगर जो सुन रही हैं, दे मे नॉट एग्री विद मी, बट यू नो व्हाट आई मीन. आई जस्ट taking Beacon House as an example. I have a lot of friends who are principals at Beacon House schools, but a lot of the teaching, a lot of the quality, a lot of the culture of the school depends on the area. Unfortunately, it depends on the area in which the school is based. So ये बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं इन प्ले. उसमें सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल्स को ट्रेनिंग ही नहीं थी कि हम वो कैसे ग्रेड्स भेजेंगे, आगे भेजें. पीपल डिडंट नो कि हम किस चीज के ग्रेड्स भेजें. बहुत बार हमारा ये भी होता है आयशा कि बच्चों के, और ये मैंने बहुत देखा है कि बच्चों के जब ओ लेवल्स में बहुत अच्छे ग्रेड्स होते हैं तो बहुत से बच्चे बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं A1 में. जैसे अभी तो बड़ा टाइम है, हम और ये मैं हमेशा जब स्कूल्स में जाती हूँ, मैं ट्रेनिंग्स कराती हूँ टीचर्स की, काउंसलर्स की, स्टूडेंट्स की, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ, प्लीज टेक योर A1 मॉक एग्जाम सीरियसली, बिकॉज दे फील इट्स ओके मैम, अभी हम सितंबर अक्टूबर में जो हमारे टेस्ट होंगे ना, उसकी बेसिस पे हमारे ग्रेड्स आगे चले जाएंगे. हमें फर्स्ट ईयर में A1 में कुछ करने की जरूरत नहीं. अब हम चिल कर रहे हैं, हमने ओ लेवल्स में बहुत पढ़ा, अब फिर हमारे पास 1 साल पूरा होगा ए लेवल्स की तैयारी करने का. दैट्स अ जनरल माइंडसेट कि ठीक है एग्जाम से पहले पढ़ेंगे. सो अब इस बार ये हुआ कि वो एग्जाम से पहले बेचारों को बारी नहीं आई. अब वो जिन बच्चों ने अच्छे भले ए स्टार वाले, अच्छे ओ लेवल्स वाले बच्चे जो थे, उनने जब अपना फर्स्ट ईयर चिल किया, वो फर्स्ट ईयर की बेसिस पे मार्क्स गए, तो वो वहां हो गए. आई पर्सनली नो किड्स. एक बच्चा था, उसका एएस लेवल में बुरा रिजल्ट आया, उसने बड़ी मेहनत की, उसने रिपीट किया अपना ए लेवल एग्जाम्स, उसने दिया और उसका ए आया. उस स्कूल की पॉलिसी थी, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगी, स्कूल की रूटीन एक पॉलिसी थी कि हम रीटेक का मार्क आगे नहीं भेजते प्रिडिक्टेड ग्रेड में. उनने रीटेक का मार्क कैम्ब्रिज को भी नहीं भेजा. उनने जो उसका पहले बी या सी आया था, उनने वही भेजा, क्योंकि उनकी एक पुरानी पॉलिसी चल रही थी कि हम रीटेक का मार्क आगे नहीं भेजते. उस बच्चे का सी आ गया, उसका पहले बी आया हुआ था, उनने बी भेजा, अब के कैम्ब्रिज ने सी दे दिया. उसने कहा मेरा तो ए जो था वो सी बन गया. So then we had to write to the university to say, देखे उसका retake में A था, he got into the university he wanted to go to because the university was flexible. So I think हमें अपनी universities को हमने ये narrative देना है that they now have to be flexible, और school से ये बात करनी है कि they have to now support the students. If they have to go the extra mile, कोई extra reference देना है तो please दे दें, अपनी policies को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. मेरी बेटी का अपना उसका रिजल्ट मिस हुआ, उसके she was expected a very high grade, उसका थोड़ा सा कम आया, तो the school wrote to the university and they said ये हमारी star pupil है, इसका ये है. उनकी इंग्लिश टीचर छोड़ के जा चुकी थी, वो आयरलैंड चली गई थी वापस. They contacted her, she wrote a reference
and they sent that reference to the university in England. And they eventually took her. They waited for a month and for the A-level results, and they took her. So, so the school was supportive. So I think agar schools ko apne bachchon ka exact potential pata hota hai. So if you know your child, please make the effort. अपना personal contact use करें, university को reach out करें and talk to them. मेरी बेटी की जो school counselor थी, उसने अपना contact use किया in the university. She said professional contact obviously. उसने कहा नहीं हमारे school आते हैं, वो visit करते हैं, marketing करते हैं अपनी university की, हम उनको लिखते हैं. उन्होंने लिखा and this university said yes, we will take your reference seriously. So it makes an impact. And I think schools need to do that, and local universities will need to be open to that and have the more human element rather than just the number element. Great. Okay, Saima, we have time for one last question. Neelufar Malik is saying that just an hour ago, it was announced in England that they will use teacher estimated results, not the algorithm ones. And this was a BBC breaking news. So what does this mean? The Cambridge results don't matter? No, that is only for England. That is only for the schools in England. You have to remember that the schools in England are also regulated by the British government. So I do not think that Cambridge will be in a position to give this kind of flexibility to all international schools or even to all schools in Pakistan. And as I said earlier, they cannot say कि जी हम कराची ग्रामर स्कूल के तो रिजल्ट हम ले लेते हैं, लेकिन बाकियों का जो है वो हम इस तरह से नहीं लेते. You know what I mean? क्योंकि या हमें HSN का तो हमें पता है या KGS का पता है, तो हम इनके ले लेते हैं, बाकियों का हम नहीं कर सकते, वो जो आपके गली मोहल्ले में एक स्कूल है. So इंग्लैंड के तो schools already regulated हैं, England by their own government. To a large extent, उनकी monitoring होती है, उनका education department उनकी वो करता है, पूरी evaluations करता है, etc. So they know that they are at least at a minimum level. पाकिस्तान में, अफ्रीका में, श्रीलंका में, इथियोपिया में उनको क्या पता कौन टीचर है, क्या असेसमेंट कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, रिश्वत लेके कर रहे हैं, ग्रेड्स देख के कर रहे हैं. I'm sorry, I'm being very blunt. So so I really don't think that they will go only by teacher assessment grades. अगर उन्हें कुछ रिवाइज किया भी, so उसके ऊपर वो कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस रख के रिवाइज करेंगे, वरना आपको सबके A's आ जाएंगे. फिर क्या होगा? When everybody gets A's, all those 2 lakh students get A's and B's, which university will be able to give them a place? जो फेल हो रहा था वो भी अब टॉप कर रहा होगा. So we have to be realistic. In an ideal world it would be great, yes. लेकिन क्या करें, कोविड है, it's. मैंने तो अभी मैं शाम को भी एक टीवी चैनल पे बात करी थी, and I said, look, at the end of the day we have to be grateful. We are all okay. हमारे घर में कोविड नहीं है, अल्लाह का शुक्र है. हमारे बच्चे इस चीज से निकल आए हैं सेफली, इनके रिजल्ट भी मिल गए. बस अब अल्लाह करें इनके एडमिशंस भी हो जाएं, दे स्टे सेफ और ये अपने दे मूव ऑन. और जिनके बहुत बुरे रिजल्ट्स आए, इफ दे हैव टू रिपीट, यस प्लीज रिपीट सो दैट यू कैन गेट अ बेटर चांस. वरना अगर आपका किसी भी फर्स्ट चॉइस में नहीं हो रहा, सेकंड या थर्ड चॉइस यूनिवर्सिटी में हो रहा है, टेक इट एंड मूव फॉरवर्ड. बिकॉज जिंदगी की हमने ये 6 महीने में देख लिया है कि कोई देयर आर नो गारंटीज इन लाइफ. एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, the mental health of our children is of paramount importance. ये बच्चे जितने ब्रेव हैं, इनने 5 महीने घर के अंदर बंद होके होम स्कूलिंग की है, अनसर्टेनिटी फेस की है, हमसे ज्यादा और ये किसी को कह नहीं सके. ये लोग अपने फोनों में और स्नैपचैट में बेचारे बंद रहे हैं. And and I think we need to give them a break, and as parents we need to be less angry and we need to be more supportive. हमारे बच्चे अगर गुस्से में हैं भी, हमें उनको काम डाउन करना. अगर हम भी कहेंगे बहुत ज्यादती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हम उनकी एंजाइटी और बढ़ा रहे हैं. We have to help them move forward. You are absolutely right, and I completely agree. We are planning to invite somebody from the ministry to come and talk on this issue, so we would love to have you back, because it is an issue that affects a huge number of students, a huge number of ammis, and but we can I interrupt you here? एक बार, we have to also remember that it is an issue that only affects a minority of Pakistanis. Yeah. Please let's. No, I agree, a minority, but numbers. But numbers बहुत हैं. 1.1%, but the numbers. One class. जिसका बच्चा होता है ना, like the one. उसके लिए वही है. उनके लिए तो the end of the world, like. Of course, of right. course. जो बच्चा मेरी बेटी का जिस दिन रिजल्ट आया, I was shocked. मैंने फोन किया स्कूल, मैंने ईमेल भेजी, मैं भी बड़े गुस्से में थी.
मैंने फिर जूम कॉन्फ्रेंस कॉल की उनके प्रिंसिपल से, उनने मुझे समझाया, उन्होंने कहा देखें वी अंडरस्टैंड दैट यू आर अपसेट, लेकिन हमारे स्कूल का रिजल्ट, आई नो इट विल मेक यू फील वर्स, लेकिन हमारे स्कूल का रिजल्ट एक्चुअली 2% बेटर हो गया पिछले साल से, बिकॉज उस वक्त मुझे नहीं पता था. सो देन आई पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव एंड ही सेड आपका गुस्सा अपनी जगह है, इट विल probably not make you feel better if I tell you that your daughter has been unlucky, but unfortunately she has been unlucky. So he sat down and counseled me, and I said yes, you are right, it just took a few hours for me to calm down, and when I calmed down, my daughter calmed down. And then So you, I think as amnis we need to be calm. absolutely. Well, thank you so much, Saima. This was amazing. And we do plan to keep doing sessions on O level. So we will keep reaching out to you. Thank you so much for Pleasure to be such a with you again. guidance. Thank you. Take care. Bye.